Hello everyone, welcome back to my channel. I am Saloni Singh. So in this series of 12th standard video, we have started with first chapter of organic, that is haloalkanes and haloarenes. And in that particular topic, I have prepared two videos. First is your classification of haloalkanes and haloarenes, their nomenclature, and then we have come across through preparation of haloalkanes using alcohol. So before proceeding to the next part of this particular chapter, I would suggest you to visit those two videos for a better clarity so that you can understand the next part. Yes. One more thing, in the previous video, the last reaction that we have discussed was Diaziens reaction. So basic Diaziens reaction, we have seen that alcohol, when react with thionyl chloride SOCl2, it is giving you RCl plus SO2 plus HCl gas, and we have said that this SO2 and HCl, they are in the gaseous phase. Since they are in the gaseous phase, they readily escape. और अगर ये दोनों बाहर निकल गए तो आप रेडीली ये प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हो, आपको सेपरेशन कॉस्ट की भी ज़रूरत नहीं है. सो आई हैव टोल्ड यू वन क्वेश्चन कम्स ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट व्हाई डार्जीन्स रिएक्शन और द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ haloalkanes using thionyl chloride is most preferred. So answer is here because the product that is obtained does not require any extra expenses for the separation of the byproducts. Okay, so we have not seen the mechanism. Let's see the mechanism quickly for this reaction. This is your alcohol and this is your thionyl chloride. S double bond O, chlorine and chlorine. See, in any mechanism, it is very essential to identify who is acting like a electrophile and who is acting like a nucleophile. एकदम क्लियर है. ज़रा देखो, इस सल्फर से खाना मांगने वाले कितने लोग हैं? 3. खाना मतलब आई एम टेलिंग इलेक्ट्रॉन. सो दिस सल्फर इज बीइंग, 3 तरह से इसको खींच रहे हैं. ऑक्सीजन इज ऑल्सो स्नैचिंग द इलेक्ट्रॉन एंड दीज क्लोरीन एटम्स आर ऑल्सो स्नैचिंग द इलेक्ट्रॉन्स. सो 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो डेफिनेटली ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज की तरह एक्ट करेगा. सो सल्फर इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज ओवर हियर, एंड हियर अल्कोहल वी नो दैट oxygen has 2 lone pair of electrons, so it can readily act like a nucleophile. Okay, so what is going to happen? It is going to attack on this particular sulfur, and how the bond will shift? This bond will shift over here. Sulfur at a time cannot form more than 4 bonds. So 1, 2, 3, 4. This 5th was developing. So simultaneously this bond has shifted in the form of charge. So what you are going to get? The product is R O, this H I am writing below this H, and since oxygen has given its lone pair of electron, it will occupy positive charge. Then this is your sulfur with 2 chlorine atoms, and there is 1 oxygen with the negative charge. Okay, now this oxygen with the negative charge is trying to restore its bond. Again, as I have told you, sulfur cannot form more than 4 bonds. So simultaneously, see, 1, 2, this 3rd bond is getting developed. 4th, यानी कि एक chlorine. As such also chlorine is a good leaving group. So one of the chlorine will move out. Okay. So one of the chlorine, as it is going to move out, what product you are going to get? R. This is oxygen H, positive charge, sulfur with double bonded oxygen and 1 chlorine atom. This chlorine which has left the reaction, this chlorine which is out, it is going to attack on this R group, that is your carbon, from the back side. It is attacking the R group from the back side. So simultaneously, as a new bond is getting developed, the older bond need to be detached. तो पुराना बॉन्ड हमें ब्रेक करना पड़ेगा. तो ये वाला बॉन्ड हमने यहाँ शिफ्ट किया. ओके, ये वाला बॉन्ड हमने यहाँ शिफ्ट किया, तो सल्फर के पास कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 1, 2, 3 एंड 1 न्यू बॉन्ड इज डेवलपिंग 4. इट कैन नॉट ऑब्टेन मोर देन 4 बॉन्ड्स. तो साइमल्टेनियसली दिस क्लोरीन विल मूव आउट. ओके, so as this chlorine will move out, finally what you are going to get? This R being attacked by Cl, so it is going to form RCl. Okay, then plus you have oxygen, hydrogen, this oxygen with positive charge, and it is linked with sulfur which is double bonded. We know that chlorine has left in this reaction earlier, so this chlorine can readily approach this hydrogen, and oxygen has already positive charge over here. We need to restore it.
तो हमने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन इसको वापस रिटर्न कर दिए. व्हाट फाइनल प्रोडक्ट यू आर गेटिंग इज, I will write it on that side. See, RCl plus SO2 plus HCl. I hope you are clear. The mechanism is quite simple. In any mechanism, first identify who is electrophile, who is nucleophile. Always an electron move from efficient to deficient side. Here it has more electron, it is moving to a less electron or a electron deficient side. सल्फर कैन नॉट फॉर्म साइमल्टेनियसली मोर देन 4 बॉन्ड्स, तो हमें एक नया बॉन्ड फॉर्म करते ही दूसरा बॉन्ड शिफ्ट करना पड़ेगा. दूसरा बॉन्ड आपने जहाँ शिफ्ट किया है उसको वापस लेकर आओ. जैसे ही वापस लेकर आओगे 4 बॉन्ड डेवलप होंगे, 4 बॉन्ड डेवलप होंगे तो 5th बॉन्ड आपको ब्रेक करना पड़ेगा. क्लोरीन इज लिविंग, दिस क्लोरीन इज गोइंग टू अटैक ऑन द दिस अल्काइल ग्रुप. साइमल्टेनियसली दिस बॉन्ड विल ब्रेक. If this bond will break, simultaneously chlorine will move out. As the chlorine will move out, that chlorine is going to approach this S plus to give you the product. So I hope the mechanism is clear. See, this is just for a better understanding of the reaction. In board exams, आपको कभी भी इन reactions के mechanism नहीं आते हैं. The questions are being asked on those mechanisms only. Directly आपको वही mechanism पूछे जाते हैं एग्जाम में जो आपकी NCERT में ऊपर heading mechanism डाल के पूरा बताया हुआ है कि yes this is the mechanism. Other reactions जिनका mechanism NCERT में mentioned नहीं है, it is not being asked. So it's just for a better understanding for the reaction. So yes, so after the mechanism, let's see one more question. The question is, since we are taking a alcohol and we are preparing haloalkane, can we use the same method to prepare a haloarene? I am taking phenol, treating it with SOCl2. So expected product जैसा ऊपर का reaction है उस हिसाब से हम सोच रहे हैं कि ऐसा कोई product generate होगा. This can be a possibility, but the reason is the reaction does not take place. Now the question comes is why you cannot obtain a haloarene using phenol if you can obtain a haloalkane using alcohol? The answer is very simple. See, this phenol which you are taking, we know that here oxygen has lone pair of electrons. This lone pair of electrons of oxygen are in conjugation with the ring, So what is happening in the conjugation? See, this double bond is delocalized. Since the double bond is delocalized, see what is happening. This is your negative. Here a partial double bond character is developed. See, this oxygen lone pair is shifting over here, so it will develop a partial double bond character between the carbon and the oxygen. What is going to happen? Let me make all the structures first. So this is how the things will proceed. Here you will occupy negative charge, here there will be bond, and here there will be bond, double bond OH, plus again it will shift on this side and this will be restored. So you will get, okay. Now what I am trying to say is, आपको ये रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए यहाँ से बॉन्ड का क्लीवेज करना पड़ेगा. कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड you need to break. If this carbon oxygen bond is developing this partial double bond character, now this double bond is quite stronger and it is difficult to break. So you cannot break this bond, and if you cannot break this bond, you cannot replace OH group by Cl group. Very simple. So the simple answer is, since the electrons of the oxygen, the lone pair of electrons of the oxygen are delocalized in the ring, that's why they develop a partial double bond character between carbon and oxygen, which is quite strong and difficult to break and cannot be replaced by chlorine atom. So I hope you are clear. Okay, very simple. Now we can move to the preparation of haloalkane using hydrocarbons. Yes, so let's start with the preparation of haloalkane using hydrocarbon. Using hydrocarbon we are using.
सो हाइड्रोकार्बन में हमारे पास दो ऑप्शन है, आइदर वी कैन यूज अल्केन और वी कैन यूज अल्कीन. सो फर्स्ट वी विल सी द प्रिपरेशन यूजिंग एन अल्केन. सो whenever you are taking any alkane and you are treating it with chlorine or bromine gas, why I am specifying chlorine and bromine gas, क्योंकि अगर आप आयोडीन या फ्लोरीन यूज़ करते हो तो दोनों में एक प्रॉब्लम है, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव हो जाती है, तो इट इज़ नॉट मोर प्रेफरेबल, उसको इनडायरेक्टली ये रिएक्शन कैरी आउट करना पड़ता है. और आयोडीन के केस में रिएक्शन रिवर्सिबल है. तो दैट्स व्हाई आई एम स्पेसिफाइंग कि व्हेन आई एम ट्रीटिंग एनी अल्केन विथ क्लोरीन और ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट, विदाउट लाइट एंड हीट you cannot carry out this reaction. So light or heat you are taking, it is going to undergo through free radical substitution and it is going to give you mono-substituted products. Now let's see, take the example of methane. Okay, you have CH4 and what I am going to treat it with chlorine gas in presence of sunlight, it is going to form CH3Cl. What I have said, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन मतलब एक एटम की जगह पे दूसरा एटम आ जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन गया और वहाँ पे क्या आ गया, क्लोरीन, और एक और क्या बाहर गया, HCl इज आउट. अगेन इफ आई एम ब्रिंगिंग क्लोरीन in presence of sunlight, it is going to give you the product CH2Cl2. Okay, again if I am treating it with chlorine, one more hydrogen will be substituted and it will become CHCl3. Okay, again if I am treating it with sunlight and chlorine, it is going to substitute this last hydrogen also. That means the reaction will substitute all the hydrogen present in the alkane. जितने ज़्यादा पॉसिबल हाइड्रोजन है आप सबको रिप्लेस करके बहुत सारे प्रोडक्ट जनरेट कर सकते हो. दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ मोनोहैलोजेनेटेड प्रोडक्ट बिकॉज ओनली वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड ओवर हियर. डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, दैट मीन्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रोसेस यू कैन ऑब्टेन पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स. बहुत सारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जनरेट हो सकते हैं. That's why the question comes in your exam is why this particular method is not most preferred for the preparation of haloalkane. The answer is since it is generating too many polysubstituted products. अब बताओ, आपके रिएक्शन कंटेनर में आपको चाहिए सिर्फ CH3Cl और आपके कंटेनर में 4 प्रोडक्ट जनरेट हुए हैं. आपका सेपरेशन का कॉस्ट प्रोडक्शन के कॉस्ट से ज़्यादा आने लगेगा. तो आप क्यों प्रेफर करोगे ये मेथड? आपको सेपरेट करने में ही आपके बहुत सारे पैसे चले जाएंगे. तो यू विल डेफिनेटली प्रेफर सच मेथड कि आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट मिले और फिर इसमें सेपरेशन कॉस्ट ना लगे. यहाँ पे तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, फिर मिक्सचर को सेपरेट करने का खर्चा अलग. सो दिस मेथड इज़ नॉट प्रेफर्ड एट ऑल. चलिए, अब यहाँ पे क्या था, आपके पास चारों हाइड्रोजन, ऑल द 4 हाइड्रोजन दे वर लिंक्ड टू द सेम कार्बन एटम. सेम कार्बन एटम से लिंक्ड थे यानी सबकी वैल्यू इक्वल थी, पर हर जगह ऐसा ज़रूरी नहीं है ना. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम टेकिंग CH3, CH2, CH3, यहाँ पे इस कार्बन एटम और इस कार्बन एटम से लिंक 3 हाइड्रोजन एटम की वैल्यू सेम है, इक्वल औधा है दोनों का. लेकिन ये थोड़ा अलग है, ये सेकेंडरी कार्बन है, इससे लिंक्ड हाइड्रोजन की औकात अलग होगी. ठीक है, तो इससे लिंक्ड हाइड्रोजन की औकात अलग होगी तो आप प्रोडक्ट क्या जनरेट करोगे? प्रोडक्ट कैन बी, देयर विल बी 2 पॉसिबिलिटी, या तो सब्स्टिट्यूशन आपके एंड वाले उस पे हो. ठीक है, CH2Cl, आई गेस दिस chalk is not visible, I will write it through this one. So the substitution is possible on either sides. या तो इस साइड पे क्लोरीन अटैच हो जाए या इस साइड पे क्लोरीन अटैच हो जाए, कोई तकलीफ नहीं है. लेकिन एक और चांस है कि क्लोरीन एटम सेकेंडरी कार्बन एटम से अटैच हो जाए. ठीक है, ये भी तो है और ये भी है. सो विच इज़ द मेजर प्रोडक्ट? ठीक है, दोनों बन रहे हैं पर ज़्यादा कौन बन रहा है? तो फॉर दैट सेक वी नीड टू नो द ईज़ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि कौन सा हाइड्रोजन रेडिली रिप्लेस होता है. कि जितने भी स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लिखते हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन द व्हाट काइंड ऑफ इंटरमीडिएट जनरेटेड इन द रिएक्शन. इंटरमीडिएट मतलब कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल. तो क्या जनरेट हुआ है? यहाँ पे हम ईज़ ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर के बेस पे दे रहे हैं?
फ्री रेडिकल के बेस पे, क्योंकि मैकेनिज्म आप यहाँ देख सकते हैं, इट अंडरगो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का मतलब फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट की तरह जनरेट हुआ होगा, तो उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर आपने पढ़ा है, बेंजाइलिक अलाइलिक आर मोर स्टेबल। व्हाई बेंजाइलिक अलाइलिक आर मोर स्टेबल? लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अलीलिक कंडीशन, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 with a free radical. Since they are resonance stabilized, see, they are being resonance stabilized, and that's why they are considered to be more stable. This is your allelic condition. In the same way you have benzylic condition. Okay, this is your benzyl free radical, that is also resonance stabilized. Okay, as you can see here. So 5 resonating structures are being generated. Allelic and benzylic conditions are resonance stabilized, and that's why they are considered to be more stable. Then comes the 3 degree free radical, then 2 degree, then 1 degree. तो अगर आपके पास 2 या 3 पॉसिबिलिटी है कि आपके पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन भी है, आपके पास 3 डिग्री भी है फ्री रेडिकल, तो वहाँ पे आप किस हाइड्रोजन को प्रेफर करोगे सब्स्टिट्यूट करना? तो यहाँ पे अगर ये आपका मेजर प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करने को बोला जाए तो आपका मेजर प्रोडक्ट इस केस में ये होगा, क्योंकि ये क्या है, दिस कार्बन इज योर सेकेंडरी कार्बन एंड दिस कार्बन इज योर प्राइमरी कार्बन, एंड वी नो दैट सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। अगर सेकेंडरी एंड 3 डिग्री का होता तो 3 डिग्री पे सब्स्टिट्यूशन होता, तो उस तरह से आपको जाना है। अच्छा, इस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी विल सी द मैकेनिज्म ऑल्सो, द मैकेनिज्म दैट इज योर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। दिस इज ऑल्सो फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज ओनली, it is not going to come in your exam. This is your first step in any free radical mechanism is initiation. Initiation किससे होगा? हमारा सिंपल रिएक्शन क्या, देख हम सिंपल रिएक्शन एक बार याद करते हैं क्या था। CH4 when treated with chlorine in presence of sunlight it is going to give you CH3Cl, है ना। तो ऐसा कुछ रिएक्शन है, तो हम यहाँ पे क्लोरीन को एज अ इनिशिएशन स्टेप में यूज़ करेंगे। सी बोथ आर सिमिलरली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है जिससे बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो इक्वली दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, इक्वली दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इट इज़ गोइंग टू जनरेट 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। दिस इज़ योर चेन इनिशिएशन स्टेप। नाउ सेकेंड स्टेप इज चेन प्रोपोगेशन। चेन प्रोपोगेशन स्टेप में ये किसके पास आएगा? आपके पास है अल्केन CH3H। यहाँ पे भी ये जो बॉन्ड फॉर्म हुए हैं 2 इलेक्ट्रॉन से फॉर्म हुए हैं, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो मतलब इस कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल आ जाएगा और इस हाइड्रोजन के ऊपर फ्री रेडिकल आ जाएगा, दोनों के ऊपर फ्री रेडिकल आया, यहाँ से क्लोरीन एटम आएगा, ठीक है। सो प्लस क्लोरीन विथ इट्स फ्री रेडिकल इज देयर। अब देखो हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल और क्लोरीन का फ्री रेडिकल दोनों मिलके क्या फॉर्म करेंगे? बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा? CH3 फ्री रेडिकल इज एज इट इज प्लस HCl इज गेटिंग फॉर्म। आई होप दिस स्टेप इज क्लियर। यहाँ पे इनिशियली होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हुआ और इक्वली इलेक्ट्रॉन दोनों के पास गया, एक एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है आपका, तो वो इक्वली दोनों के पास डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इधर का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने मिलके एक नया बॉन्ड फॉर्म कर लिया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप इज वी आर स्टिल लेफ्ट विथ 1 more chlorine free radical that is going to, this chlorine free radical is going to approach the methyl free radical and going to form the bond that is CH3Cl। हो गया। सो ये हो गया आपका चेन प्रोपोगेशन स्टेप। क्या देख रहे हैं आप? फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है, तो स्टेबिलिटी किसकी आएगी? फ्री रेडिकल की। ईज ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसके बेसिस पे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फ्री रेडिकल। सो वी नो द स्टेबिलिटी ऑर्डर अकॉर्डिंगली, ओके। अब थर्ड स्टेप होता है चेन टर्मिनेशन। थर्ड स्टेप इज योर
चेन टर्मिनेशन, यानी कि अगर आपको रिएक्शन स्टॉप करनी है तो सिंपल चीज़ है, 2 मिथाइल फ्री रेडिकल को पास लाइए, दोनों अपना फ्री रेडिकल डोनेट करके बॉन्ड फॉर्म कर देंगे, या फिर आप 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल को पास लाइए, वो बॉन्ड फॉर्म करके रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे। सो दिस इज़ द सिंपल मैकेनिज्म, जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, नो नीड टू ग्रैब एनीथिंग, एकदम सिंपल चीज़ है। यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, वाई द प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ from alkane cannot be used for synthesis of haloalkane. The answer is, since it is giving polysubstituted products which are difficult to separate, the method is not preferred. इतने सारे products generate होंगे तो कौन industrialist इस method को prefer करेगा? So I hope you are clear. One more question that is asked from this section is, as I have told you initially only when I have started writing all these things, कि आप क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन तो रेडिली कर सकते हो, बट फ्लोरीनेशन हाईली एक्सप्लोजिव होता है, तो उसे हम अवॉइड करते हैं या फिर इनडायरेक्ट मेथड्स फॉलो करते हैं। एंड आयोडिनेशन में क्या होता है, रिएक्शन इज रिवर्सिबल। इफ़ यू कैरी आउट द आयोडिनेशन, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव CH4 and I want to carry out iodination in presence of sunlight, this reaction is reversible. This reaction is reversible. What is happening in this case? You are expecting the product as CH3I plus HI. But since the reaction is reversible, so how you are going to mention it? Like this. जैसे ही आपने ये रिएक्ट करवाया और आपका HI प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, फिर ये दोनों ने रिएक्ट करके फिर से आपको रिएक्टेंट दे दिया, मतलब कि आपको प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू मेक दिस रिएक्शन इफेक्टिव, व्हाट वी आर यूजिंग इज, वी आर यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। Strong oxidizing agents, using these strong oxidizing agent, what they used to do, this HI which is generated, this HI is going to react with your HiO3 or HiO4 and it is simply going to form iodine के vapors along with water. तो आपका एक बाई प्रोडक्ट आयोडीन के फॉर्म में जनरेट हुआ, it will escape the reaction mixture and you will readily obtain your product. So this is again one question. So in today's session I have given you 4 to 5 reasoning questions that are being asked, or complete the reaction kind of questions are being asked. So I hope you are clear with this thing. Now we can move to preparation using alkene. Yes. Now we are going to see preparation of haloalkane using alkene. This we have already studied several times in 11th standard also. Let's see. Haloalkanes can be prepared from alkene by adding halogen acids into it. कोई भी alkene लीजिए, उसके अंदर halogen acid डालिए, आपको respective haloalkane मिल जाएगा. For example, ethene I have taken, treated it with HCl, it is giving you CH3 CH2Cl. अच्छा जी, यहाँ पे तो कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि दोनों हाइड्रोजन की औकात सेम है। औकात सेम है मतलब सिमेट्रिकल कंडीशन है। इफ़ आई एम टेकिंग CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं बॉन्ड किस तरफ शिफ्ट करूँ। हियर आप बॉन्ड किसी भी तरफ शिफ्ट करते कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना। देखिए ये था क्लोरीन नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, एंड मैंने सपोज बॉन्ड ये इस तरफ शिफ्ट किया तो दिस वाज नेगेटिव एंड दिस वाज पॉजिटिव। साइमल्टेनियसली पॉजिटिव के पास नेगेटिव भेज दो, नेगेटिव के पास पॉजिटिव भेज दो, यू विल गेट द प्रोडक्ट। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट इधर भी हो सकता था, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट इन दिस केस आप इस केस में किसी भी तरफ बॉन्ड शिफ्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बाबा? देखो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या जनरेट करना है आपको। आप जब बॉन्ड शिफ्ट कर रहे हो तो एक कार्बोकैटायन एंड एक कार्ब एनायन जनरेट हो रहा है। कार्बोकैटायन, विच कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इफ यू कैन रिमेंबर कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री विच इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। सो इसमें 2 डिग्री बनने के चांसेस हैं। 2 डिग्री कब बनेगा? जब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो आपको क्या मिल जाएगा? CH3
CH, यहाँ पे पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, है ना। तो आपका ये Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव है, आपका H Cl किसके पास जाएगा, Cl इस साइड पे जाएगा जहाँ पे पॉजिटिव है, और H इसके पास जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3 CH Cl प्लस, ठीक है, ये है आपका प्रोडक्ट। यानी कि यहाँ पे ये इस रूल को क्या बोलते हैं, दिस रूल इज नोन एज markonikov rule. What does this rule states? This rule states that always the negative part of your reagent is going to attack on that double bonded carbon atom which has lesser number of hydrogen. I am going to write it over here. The negative part of halogen acid is going to attack on that double bonded carbon atom with less number of hydrogen atom. According to the statement, the negative part of the halogen acid will go to that double bonded carbon atom. हम double bonded carbon atom तो सिर्फ ये दो ही है, इन दोनों में से जिसके पास हाइड्रोजन कम है उसके पास आपका नेगेटिव पार्ट जाएगा। यानी कि बिना ये चीज़ें किए आप डायरेक्टली लिख सकते हो प्रोडक्ट Cl will go and attack on this side. क्लियर है? Same way, if I am writing the reaction for Br, CH3 CH double bond CH2, I am taking HBr, directly the negative part will go to that carbon which has lesser number of hydrogen. So the product is CH3 CH Br CH3. क्लियर है? तो इस लॉ को तो बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। बट अगर आप यही रिएक्शन, ये जो HBr की रिएक्शन है, इफ़ यू कैरी इट आउट इन प्रेजेंस ऑफ peroxide, peroxide की प्रेजेंस में ओनली फॉर द केस ऑफ HBr, it is known as, it follows anti-Markovnikov rule or what we can say kharash effect. Let's see that case also. If I am taking, yes, if I am taking CH3 CH double bond CH2, I am taking HBr in presence of peroxide. Always remember, in presence of peroxide, the mechanism that is followed is free radical mechanism. और free radical mechanism में अब ये जो rule है, ये law है, पूरा change हो गया. HBr in presence of peroxide follows anti-Markovnikov rule. And according to anti-Markovnikov rule, the negative part of the halogen acid is going to attack on that double bonded carbon atom with more number of hydrogen atom. बस इतना सा ही difference है. With more number of hydrogen atom, मतलब this negative and this is your positive, so this negative is going to attack on this side and the product will be CH3 CH2. ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है. If it is HCl, HBr, HI, simple case है, peroxide नहीं है present, so the negative part will go to that carbon which has lesser number of hydrogen. And if it is HBr specifically, in presence of peroxide, it is going to form anti-Markovnikov rule. This anti-Markovnikov rule is also known as kharash effect. What it is also known as kharash effect of or peroxide effect. So according to that, the mechanism or the product will be like this. Oh, sorry. Here it is CH2Br. Okay, so the product is like this. अगर मैं यही चीज़ करूँ लेकिन क्लोरीन के साथ करूँ, आप बोलोगे कि मैम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, आई एम टेकिंग HCl इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड. HCl के केस में पेरोक्साइड का कोई इफेक्ट नहीं आएगा. HCl जैसे जनरली प्रेफर करता है वो यहीं पे अटैक करेगा. Only specifically for the case of HBr in presence of peroxide, it is going to follow anti-Markovnikov rule.
Clear है? Yes, so with this we have finished preparation of haloalkanes from alcohol as well as from hydrocarbons. So I suggest you watch all those videos. आपको उसमें हर उस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम्स में आपको आ सकते हैं. So if you are listening or going through the videos carefully, you will be definitely getting the benefit out of it. And if you are okay, in the next session I am going to upload the video regarding preparation using halogen exchange method. अब halogen exchange method में we have two name reaction, that is Finkelstein reaction and Schwartz reaction, and both are important according to examination point of view because name reaction directly आते हैं एग्ज़ाम में. तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो भी स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज़ पुराने वीडियोस भी देखिए. थैंक यू सो मच.